Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to the Jagran Film Festival Awards 2024. Proudly presented by Dainik Jagran in association with Government of Uttar Pradesh and supported by Government of Uttarakhand. India's largest newspaper and the flagship brand of Jagran Prakashan Limited. Now, most of us are already aware that JFF is the world's largest traveling film festival. Since its inception in 2010, it has brought great cinema, not just to Delhi and Mumbai, but also to various cities like Lucknow, Kanpur, Ludhiana, Dehradun, Patna, Ranchi, Varanasi, Prayagraj, Meerut, and many more cities. और जब हम बात फिल्मों की करते हैं तो फिल्मों से हम भारतीयों को कुछ गहरा ही लगाव होता है. हमारे जीवन के साथ कह सकते हैं बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं ये फिल्में. हमारे जीवन के हर पल को परिभाषित करती हैं. हमारे रिश्तों में सुगंध बिखेरती हैं. हम दुखी होते हैं तो हमारा हाथ थामती हैं और जब हम खुश होते हैं तो खुशी को दोगुना भी कर देती हैं. और जब ज़रूरत होती है तो इन फिल्मों से हम प्रेरणा भी लेते हैं. Every year, Jagran Film Festival also curates the best of the Indian and international cinema, bringing together the filmmakers and movie lovers on one platform. Tonight we gather here to honor the exceptional filmmakers, artists and storytellers who bring cinema to life and make it accessible to the audience everywhere. To begin, let's take a look at the incredible journey of Jagran Film Festival 2024. जागरण फिल्म फेस्टिवल सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन है, एक मूवमेंट है. यूं ही नहीं, जागरण फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल है. जेएफएफ जोड़ता है भारत के उन प्रदेशों को जिसमें 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं. जेएफएफ बनता है भारत के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक जागरण से. जेएफएफ के 11 प्रदेश बॉक्स ऑफिस की किस्मत का निर्णय लेते हैं. जर्नी लोगों के लेजेंड्स बनने की. अच्छा खाना जो है ना वो कैसे बनता मानो गलती से. वो तस्वीर में मुझे लगा मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, तो फिल्मों में जाना चाहिए. कहानियों के पर्दे पर दिखने की. यहाँ पे तो गली गली में कहानी है. इमोशंस के रूह में उतरने की. और जागरण फिल्म फेस्टिवल की आप तक पहुंचने की. Big thanks to all the entire team. Jackass Film Festival of the world. जागरण फिल्म फेस्टिवल 2024-25 की शुरुआत हुई दिलवालों के शहर दिल्ली से. A huge celebration by the cinephiles जब वे मिले अपने फेवरेट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टार्स और थिएटर लेजेंड से. Theatre is not the grammar of cinema. End of story. उनसे इंटरैक्ट किया, उनके एक्सपीरियंसेस से मास्टर क्लास ली और दिखाया अपना हुनर इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों के सामने. Good job. Very nice. Thank you. दिल्ली से जागरण का सफर पहुंचा वाराणसी और प्रयागराज, जहां दिग्गजों ने उभरते कलाकारों के साथ सिनेमा का जश्न मनाया. अब हम स्टेबल बॉय नहीं, अनस्टेबल बॉय है. स्टेबल बॉय औकात में. रांची, रायपुर, इंदौर, सिलीगुड़ी और लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंच के जागरण ने देखा नई पीढ़ी के सुपरस्टार की झलक. जब हजारों की तादाद में लोगों ने एक ही नाम पुकारा. कानपुर से लोगों का प्यार लेने के बाद जागरण ने पटना, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, लुधियाना, देहरादून, हिसार और दरभंगा जाकर लोगों को सिनेमा की रूह से रूबरू करवाया. Detailed pre-production, short breakdown, workshops with the actor is very important before you go to the set, ताकि आप जो भी करें जल्दी कर सकें. और देश भर में घूमने के बाद जागरण फाइनली पहुंचा सिनेमा नगरी मुंबई में. लोगों का प्यार, जज्बा और आर्ट एंड सिनेमा के उत्सव पर 4 चांद लगाए मुंबई ने. तुम्हारे पास ब्लिंकिट पे ऑर्डर करने के पैसे नहीं है.
और इसी के साथ जागरण का इस बार का गुड सिनेमा फॉर एवरीवन का मोटिव भी आप सभी के प्यार से पूरा हुआ। I can't wait to have more to my credit when I come back next year. अगले साल फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for Jagran Film Festival. 83 वर्ष बहुत लंबा कालखंड होता है। कई दौर बीत जाते हैं 83 वर्षों में। And for over 83 years, the Jagran Group has stood for trust, transformation, and impact. As one of India's leading media houses, it has championed meaningful initiatives like the Jagran Film Festival to empower and celebrate the artistic expression. To tell us more about this great endeavor, ladies and gentlemen, I invite Mr. Basant Rathore, Senior Vice President, Jagran Prakashan Limited, to deliver the keynote address. Please welcome Mr. Basant Rathore. Good evening, everybody. It's a matter of great delight and a pleasure and an honor for me to welcome all of you to the Jagran Film Festival's finale night. The festival has had a long journey. We started off in 2010, but every year it's a journey across 11 states. We carry cinema and your magical stories to about 18 odd cities every year. Thousands of people throng to the cinema halls to watch the magical stories created by all of you. The presence of all of you today has meant a lot to us. The support from the film industry has been terrific for the Jagran Film Festival for the last 10-12 years. And your presence today actually motivates us and inspires us to continue this festival in all its glory so that we're able to connect you to your audiences. I think that's the endeavor for the film festival. It's unlike any other film festival which is meant for the trade. It's a democratic film festival, and when I say democratic, it really means you are talking to your audiences directly. And that's what the essence of the festival is about. At the same time, typically a film festival is a one-venue affair, a one-city affair. We are possibly the only festival, only amongst the large festivals in the world, which is actually traveling to across about 18 odd cities. We travel for about 50 odd days over a period of 3 months. And that comes on the back of a lot of support from a lot of people. We get about 3,000 to 4,000 film entries every year. There's a preview panel that sits and evaluates the screenings that have been seen across these 18 cities. I have to thank the content curators. I must thank the jury panel, and some awards would be given out tonight. I must thank the jury panel for the kind of effort that they put in to select the best from the best. I'd like to thank the UP government and the Uttarakhand government for all the support that they've given us. And of course, I'd like to put a big thanks to my team, headed by Vinod. Then there's Rahul, Prashant, and there's a host of people who would have taken care of you over the period of last 3-4 months. Some of you have traveled with us. Some of you have traveled with us not just this year, but over the previous years as well. And for us, this festival means a lot. It's just not another marketing campaign. It's just not another campaign for us. It's something that we truly believe in. We are committed to creating a culture of cinema across the smaller towns across India, so that the stories that you guys deliver are taken to the right audiences, and the audiences are prepared to receive world-class cinema. So with that, I'd like to welcome you all again for this evening, and I hope you have a lovely evening. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Rathore, for those words. और अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं कि सिनेमा का कौन सा ऐसा पहलू है जो आप सबको बहुत बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है हर कोई अपने तरीके से जवाब देना चाहेगा. कोई डायलॉग्स बोल सकता है, कोई स्टोरीज बोल सकता है, कोई डायरेक्शन बोल सकता है, फेरिस्त लंबी हो सकती है, लेकिन एक ऐसा पहलू है जिसे लेकर हम सब एक मत होंगे, और वो है संगीत. हमारा भारतीय सिनेमा अपने गीत संगीत के लिए विश्व भर में जाना जाता है. That is the most unique aspect of our Indian cinema. And since its inception, Indian cinema has been woven with melodies about moments that become memories through music. The soul of Indian cinema has always been its music. And tonight, we celebrate the musicians who have dedicated their lives to creating magic
through their music. The unsung heroes behind the greatest songs, the maestros who've given Indian cinema its unforgettable soundscape. So I would like to invite on the dais the musicians who are going to play this melodies from Indian cinema for us. Ladies and gentlemen, let's hear from these fabulous musicians as they present the soul of good cinema, a musical tribute by the very artists who have shaped the soundtrack of our lives. Let's have a big round of applause for them first.
was beautiful. आपकी तालियों में भी जोरदार दम होना चाहिए इन म्यूजिशियंस के लिए. इन्होंने जो भी धुन बजाई हैं वो सभी धुन, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी यादों में गुम हो गए होंगे, क्योंकि ये तमाम उन गीतों की धुनें बजाई गई हैं जो अलग अलग दौर की रही हैं. Well, once more, let's have a big round of applause to all our maestros who performed here before you, क्योंकि ये सलाम है हमारे फिल्मी गीत संगीत को भी. Ladies and gentlemen, now coming to the retrospective section, this year at Jagran Film Festival, we are honored to celebrate the legacy of Indian and international cinema. We celebrate the retrospective of Indian cinema legend Pankaj Kapoor, whom JFF proudly calls the actor's actor. A true master of his craft, whose profound contributions to acting and storytelling have left an indelible mark on generations of audiences and also the performers alike. So let's take a glimpse into his extraordinary world of acting, ladies and gentlemen, through this audiovisual presentation. गिलोरी खाया करो गुलफाम, ज़बान काबू में रहती. सिनेमा के हर चैप्टर के साथ जुड़ा होता है एक नाम. ऐसे कई नामों में से एक नाम है श्री पंकज कपूर का, जिन्होंने कभी फिल्म एक डॉक्टर की मौत में डॉक्टर दीपांकर रॉय बनकर प्रोफेशनल जेलसी और अब्यूज ऑफ पावर जैसे मुद्दों से समाज को रूबरू कराया. आप सब लोग इस बीमारी के शिकार हैं. ऊपर से गरजते हैं और अंदर से कुष्ठ रोग करा हुआ है. तो कभी द ब्लू अम्ब्रेला, मकबूल, धर्म, रूई का बोझ, एक रुका हुआ फैसला जैसी फिल्मों के जरिए समाज को आईना दिखाया. धर्म केवल साधना नहीं, कर्तव्य भी है, कर्म भी है. भेदभाव को त्यागना है धर्म. जहां एक तरफ आपके किरदारों ने फिल्म बिन्नी एंड फैमिली की 3 जनरेशंस की अनबन को सादगी से दिखाया, वहीं दूसरी तरफ हैप्पी और मटरू की बिजली का मंडोला जैसी फिल्मों ने सोशल मिसफिट और सटारिकल ब्लैक कॉमेडी को दर्शाया. आसमान में भैंस, गुलाबी भैंस. अपनी फिल्मों में कैरेक्टर चुनने की जगह कैरेक्टर बनने की सोच लिए पंकज कपूर ने अपनी फिल्मों के जरिए हमें दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया है. रेट्रो से लेकर कंटेम्पररी सिनेमा के दौर तक पंकज कपूर की फिल्मों का जो योगदान हमारे समाज पर पड़ा है, उसके लिए जागरण परिवार उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहता है. मैं वो खाता हूँ ये गाजर, दिमाग से बिल्कुल दुरुस्त रहता है. शराब करे. Ladies and gentlemen, now it's my privilege to invite Shri Pankaj Kapoor to the stage. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Pankaj Kapoor, and may I please invite Mr. Basant Rathod to felicitate Mr. Pankaj Kapoor. It's a big moment for us, ladies and gentlemen, at the Jagran Film Festival to have Mr. Pankaj Kapoor here with us. जिस दौर को अभी आपको एवी के माध्यम से भी हमने दिखाया, जब लंबी कतारें लगती थी थिएटर्स के में फिल्म्स देखने के लिए, उस दौर से आज का दौर, लेकिन पंकज कपूर जी का जुनून और उनकी फिल्मों में वो ताजगी आज भी बरकरार है. Thank you so much, Mr. Rathod, for felicitating him. And पंकज सर, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप पोडियम पर ज़रूर पहुँचें, क्योंकि मेरे पास एक सवाल है पंकज जी के लिए. बिकॉज फिल्म वर्ल्ड में एक मिस्ट्री चल रही है. देयर इज अ फिल्म बज़ गोइंग अराउंड. आई वुड लाइक, ओके, लेट्स टेक अ लुक एट दिस पिक्चर. पंकज जी, टेक अ लुक हियर. बहुत गहन विमर्श में अपने दोस्तों के साथ आप जुटे हुए हैं. जरा जानना चाहेंगे ऐसे क्या बात था, क्या मुद्दा था जिस पर ये विचार विमर्श चल रहा है? मेरा ख्याल है जागरण वालों ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की. उनको मालूम भी नहीं था गोके इन्होंने ये फेस्टिवल का हिस्सा एक मेरे शहर में रखा, लुधियाने में. और फिर इन्होंने, सुनैना जी ने मुझसे कहा कि इफ़ आई कैन गो टू माई होम टाउन. सो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स. सो ऑल दीज आर माई स्कूल मेट्स एंड कॉलेज मेट्स. आप खुलासा करना चाहेंगे? सॉरी आप खुलासा करना चाहेंगे, बात रखना चाहेंगे, भाई कौन सा मुद्दा था? मतलब फिल्मों की ही बात हो रही थी या फिर वो वक्त था जब आप? नहीं, जनरल इस बात पे बात हो रही थी कि हमें ज़्यादा ऑफन मिलना चाहिए
और कैसे कई सालों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जी। पंकज सर, आपसे यहाँ पे अनुरोध करना चाहेंगे क्योंकि आपका अनुभव कई दशकों का अनुभव है, कई दौर आपने इस इंडस्ट्री के देखे हैं, तब और अब का दौर। अपने अनुभवों से कुछ अल्फाज हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मैं जागरण ग्रुप का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये विचार भी किया कि मेरी फ़िल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, और जो उनका फ़िल्मों का सिलेक्शन था वो भी बेहद अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। और बाकी 45-48 साल का सिलसिला है काम का, तो ये कह पाना कि तब का ज़माना और आज का ज़माना, काम तो काम है, भले तब होता हो या आज होता हो, और आज काम करके भी उतना ही अच्छा लगता है जितना आज से 30 साल पहले काम करके अच्छा लगता था। और दौर में, इस काम के दौर में जो साथ होते गए, उनके साथ जितना साथ निपटा गया, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाया और अच्छा महसूस होता है। अब आपने चूँकि इसरार किया कि मैं कुछ ज़रूर कहूँ, तो मैं 4 लाइनें कह के यहाँ से कंक्लूड कर दूँगा। एक छोटी सी नज़्म है मेरी कि नाम उसका सुकून है, मज़हब बेनाम हो जाएं तो सुकून मिले, मज़हब बेनाम हो जाएं तो सुकून मिले, खुदा हर में, हर खुदा में है, यहाँ पे हर का मतलब हरी भी है, खुदा हर में हर खुदा में है, ये बात आम हो जाए तो सुकून मिले। क्या बात, बहुत। नज़र का उठना कुछ कहना लाजिम है, नज़र का उठना कुछ कहना लाजिम है, हर नज़र पाक हो जाए तो सुकून मिले। सूरज, चांद, नदियाँ, नाले सबके सांझे हैं, इंसान भी इंसान का हो जाए तो सुकून मिले। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर हमारे बीच आने के और इन खूबसूरत अल्फाज के माध्यम से अपने एहसास हमारे साथ साझा करने के लिए। So that was the retrospective India, and now for our international retrospective, ladies and gentlemen, we pay tribute to the illustrious filmmaker Christoph Zanussi, whose cinematic vision has inspired audiences worldwide. As part of this tribute, we will now play an AV showcasing his exceptional body of work. Cinema has the power of greatest communication all around the world. But what made cinema so powerful includes few names. One such name is of Christoph Zanussi, the legendary Polish film and theatre director who, with his storytelling, has always broken the barriers of the perceived notions of filmmaking. Whether it's about showing a man's vulnerability with the constant factor. Every man has got his own choice. Just like you. No. Or a love story between two nations during World War with A Year of the Quiet Sun. I believe happiness can be found even in suffering. Showing the impact of young manipulation with camouflage. Or experimenting with science to get power over others through Eater. The range and variety of stories you've made, people feel and connect with since 1968 and continue to do so is implausible. We at Jagran Film Festival salute you for your contribution to the art of the cinema. That's a tribute to Christoph Zanussi. कहा जाता है कि मानवीय संवेदनाएं भाषाओं की सीमा से बहुत परे होती हैं और वर्ल्ड सिनेमा इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि आज हम जानते हैं भारत में भी हम कोरियाई सिनेमा भी देखते हैं, चीनी सिनेमा भी देखते हैं, तमाम अन्य देशों की भाषाओं के साथ साथ ट्रांसलेशंस के साथ हम इन फिल्म्स को एंजॉय भी करते हैं. Well, Mr. Zanussi has sent a special message to us accepting this award, so we would like to play this message for all of you. Hello everybody, I'm Christoph Zanussi, I'm a Polish filmmaker. I'm very honored that you have invited several films of mine for your retrospective. I like very much the name of your festival because it includes travel. And travel is a metaphor of life, and travel is also something physical,
By the way, I have been over 40 times to India during my long life, and as you can understand, it means I have some very warm spot in my heart when your country is concerned. So thank you for inviting my films. Watch them, please, and I hope you will find something of value that you will appreciate. Anyway, I send all my best wishes to warm India from very cold Europe. Not very cold, but cold enough. All the best, Krzysztof Zanussi. Well, it was an honor to have Mr. Zanussi in our retrospective section, ladies and gentlemen. A great film festival is built on selecting films that are truly worth the audience's time. The people who take on this responsibility, they spend countless hours watching, evaluating, and picking up the very best among many brilliant submissions. Every year, Jagran Film Festival curates the best Indian and international films, bringing together filmmakers and movie lovers on one platform. This year, JFF 2024 received around 3,000 films, and that too from over 92 countries. Before we begin our celebrations tonight, we must acknowledge the immense dedication and efforts of JFF 2024 preview panelists. Preview committee members are Manjula Shirodkar Negi, author, film critic, and she served on film selection committees for IFFI too. Sham Malik, journalist, filmmaker, a seasoned international producer, and a member of screening committee for IFFI and SCO2. Subodh Sharma ji, film critic and former CBFC member. Kamlesh K. Mishra, national award-winning filmmaker, writer, CBFC advisory panel member too. Rekha Rani Gupta, film critic, film curator, jury member for BIF, and a long-time preview committee member for IFFI and SCO Film Festival. Muhammad Shakil, journalist and art critic. Purushottam Arvind Lele, filmmaker of Acclaim Films and jury member of Indian Panorama 2023. Ranjana Yadav, journalist, film producer, and director with experience in the Censor Board and NFTC. Satinder Mohan, film critic, journalist, retired ADG, former CBFC advisory panel member. Well, their hard work has been instrumental in shaping this year's curation, and we extend our heartfelt gratitude to them. Coming to the mentor panel, additionally, JFF 2024 was guided by the expertise and mentorship of some of the finest minds in the industry. Rahul Ravel, veteran filmmaker and former jury member of the National Film Awards. His biographical book, Master of Work on Raj Kapoor ji, it's a must-read for all the film lovers, where he shares his experiences working as an assistant to the legendary Raj Kapoor ji. Sudhir Mishra ji is 3 times National Award winner filmmaker, celebrated for exceptional films with a career spanning over 4 decades. Sudhir ji is also the winner of the prestigious Chevalier of the Ordre des Arts de Lettres from French government, recognizing his contribution to the global cinema. Rajat Kapoor ji, 3 times National Award winner, renowned actor-director, and a writer known for his experimental storytelling. And their experience and insights have enriched the festival, making it an even more prestigious platform for the filmmakers. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for our mentors. And tonight, as we celebrate the cinematic excellence, let's take a moment to appreciate the masters behind this process. Please put your hands together for the Jagran Film Festival 2024 jury as I welcome them on the dais. Mr. Jaypreet Desai, filmmaker, producer, screenwriter. I would like to invite you on this dais. Madhurita Anandji, filmmaker, producer, and writer. Alejandro Cortes Calahorra, Spanish filmmaker, producer, and scriptwriter. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our jury members. Usha Jadhav, the National Film Award-winning actress, producer, and member of Spanish Cinema Academy. Our jury members who are here on the dais, and Pisha Shadri-ji, 8 times National Award winner filmmaker, and Supan S. Verma, award-winning director, producer, and screenwriter. They couldn't make it today because of their commitments, but Supan had his first day shoot at Lucknow today for his next film, and all the best to him for that. Now, before I move on, I would like to take one question to our jury members, because it was a tremendous task of watching those films and selecting the best. I must tell you, the competition was very tough. We received wonderful films this year.
But I would like to ask each one of them as to what was most inspiring or most surprising aspect of the films they judged. I think the most delightful part was the Indian shorts, where there was a lot of cinematic innovation, which was just lovely. The use of black and white. And I personally enjoyed the OTT entries as well, which melded independent filmmaking with some solid mainstream storytelling. No, I think the entire experience is amazing, you know, to watch a gamut of films coming from across the world. It is a window into the life, the stories, the cultures from all around the world. And it was amazing to interact with my fellow jury. And I'm here on behalf of Suparn and Sheshadri sir. So thank you to the organizers, and heartiest congratulations to all the filmmakers. I mean, we have done our job, but honestly, we are all students of cinema, really. So all the best to you and more power to you. Well, first thing I want to thanks to the programmers and to the co-juries, because the experience, the process was amazing. But also it was amazing to discover how to talk, for example, about loneliness, friendship, or family issues from so diverse perspectives. Or in the case of the documentaries, how they shared with us the personal challenges through universal themes. In Indian short films, the tenderness, humor with which selected Indian shorts transmit the point of view of kids and old people, but from the context of a school or home life, to the unique experience of going to the cinema theater. And in the case of OTT, we saw from big stories to private life conflicts, with the search for equality as one of the most important themes nowadays. Well, good evening to all of you. First of all, of course, I would like to congratulate Jagran Film Festival organizers, directors, and programmers. Well, the process of judging was really nice. I think I saw more than 30 or 40 short films, international short films, Indian short films, international documentaries, Indian documentaries, and including OTT. It was such a diverse collection. It was really, really beautiful, and it was nice to discuss that what we like among me, Alejandro, and Madhurita. That process was really nice to say, hey, what I like, what you like, okay, then let's come together, let's discuss. And of course, discussing about cinema is the thing which we love. Talk about cinema, let's not talk about people, just talk about cinema, celebrate cinema. And we are here to celebrate cinema. Thank you. Well, thank you so much for making GFF an unforgettable experience for all of us. I request you all to take your seats. We move on to the most important part of this evening, and that is the film awards. Ladies and gentlemen, a great film starts with a great story, and the Best Screenplay Award, we begin with this award, the Best Screenplay Award, and this award goes to a writer who brought a compelling story to life. I would like to now invite Usha Jadhav ji and Madhurima Tuli ji to the stage to announce the winner. So let's see who's got the Best Screenplay Award. So the award for Best Screenplay goes to Reema Das for Village Rockstar 2. Congratulations to Reema Singh, Reema Das for The Village Rockstar 2. Congratulations, Reema ji. And I request our guest presenters to please stay on the dais as we move on to the next award, because cinema is a visual experience and cinematographers play a huge role in bringing that magic to the screen. The award for Best Cinematography celebrates the beauty of storytelling through the lens.
Ladies and gentlemen, now I request our guest presenters to do the honors and to announce the award. The award for Best Cinematography goes to Rajesh S. Jala and Arjun Negi for the Spark Chingari. Please welcome Rajesh S. Chala and Arjun Negi for the film The Spark Chingari. The Best Cinematography Award goes to them. Congratulations to you, and the other person is not here, but thanks to our guest presenters for presenting this award, for doing the honors. And now we come to the next category of awards, that's for editing. And editing is where the magic happens, right? Because the right cuts bring the scenes to life, making storytelling seamless. To announce the award for best editing, may I now request Madhurita Anandji and honor on the stage. I would like to invite them on stage to announce the winner. Madhurita Anandji and honor to come on the stage to announce the winner. Winner of Best Editing. So, the award for Best Editing goes to one of my favorite filmmakers. Mine too, and for one of the favorite films of this year, Reema Das for Village Rockstar 2. Wow, that was Reema Das again, getting the second award of this evening for Best Editing. The film Rockstar, Village Rockstar 2 gets the award. We would like you to share your views with us, please. Thank you, Jagran Film Festival. Thank you, jury. This film, Village Rockstars, it came from a deep love of storytelling for the people, for the land that shaped me. And this film is a celebration of dreams, dreams of children and young people who refuse to be limited in any circumstances. Village Rockstars, it is not just a film, it is an emotion for us. And I have been living with this film last more than 10 years now. And it started as a small dream, and then it became my world, our world, and shaping me, challenging me, and also teaching me the power of patience and belief. And it would not have been possible without my incredible team, my family and friends, and also God and universe. And thank you very much. Thank you everyone for your love and support. Thank you. Well, congratulations to you, and I must say, it's a great honor to have you here producing such wonderful films. Congratulations to you, and thank you, our guest presenters, for presenting the award. Thank you. And now we come to the background score, which makes a film unforgettable. It sets the mood and elevates emotions. To present the Best Background Score Award, may I please invite Jayaprat Desai ji and Rasul Pukuti to the stage to announce the winner. The award for the best background score goes to Roy Meneses for the Spark Chingari. Roy Meneses for the Spark Chingari. Congratulations to you. I would request our guest presenters to please stay back
as we move on to the next award, which is for the music, because we know that music is the soul of Indian cinema, and tonight we celebrate the creation behind the soulful melody. To present the award for Best Music Director, may I now request our guests to please announce the winner. My favorite, the award for the best music director goes to Ram Sampath. Ram Sampath for Lapata Ladies. The award is being received on his behalf by Vishal Chavan. So the award for the Best Music Director goes to the film Lapata Ladies. Congratulations to Lapata Ladies for the award, and thank you so much to our guest presenters for presenting these awards. And Mr. Ram Sampath couldn't be here, but we have a message from him. Let's listen into what he has to say. Namaste. Even though I'm not there in person, I'm truly honored to receive this award for the music of Lapata Ladies, and I thank the entire team of JFF for celebrating our work in this manner. I'd like to thank our director Kiran Rao for her immense patience, vision and guidance, which made this process an absolute pleasure. I'd also like to thank our guiding light, our producer, our guru, Mr. Amir Khan, for his immense belief and vision. I'd also like to thank all the technicians, musicians, lyricists and singers involved in the process of making this soundtrack, because music is truly teamwork. JFF continues to be a wonderful platform for storytelling, and I'm very happy and very honored to be a part of it. Thank you so much. That's Mr. Ram Sampath, who's received the award for Best Music Director for the film Lapata Ladies. And now we come to the short films, because we know that cinema is like an ocean. Every film is a unique pearl, and short films in particular are powerful. They capture emotions and culture in a limited time, creating lasting impact. This year, the award for Best Short Film International goes to the nominees. Here we present the AV on the winner. Hello everyone, my name is Boruta Kapustinskaite and I am writer-director of the short film The Nominees, and I just found out the super exciting news that my short film just won the Best Short Film Award in your festival. It's the first award for this film and I'm very happy and very grateful, and thank you for the jury, thank you for everyone who watched the film. Have a very good evening tonight and Slava Ukraini. And we move on to the next award, and that is the next award for Best Short Film Indian. We have international as well as Indian. So we begin with the Best Short Film Indian, and for that, may I please request Amit Saadji and Shweta Basu Prasadji to come on the stage to do the honors. Hi, good evening, everyone. I'm so honored to be here, and congratulations to Jagran Film Festival for being one of the largest traveling film festival in the world. I think it's wonderful that we take movies to different towns and cities and explore the possibilities to expose audience with more and more cinema. Thank you so much for having me here. Good evening and same thoughts. All right. The award for the Best Short Film India goes to... The first film. The first film. The first film is the name of the film which gets this award for the Best Short Film. And the award is being received by director-producer of the film, Piyush Thakur. Let's have a huge round of applause, please. Congratulations to the Best Short Film Indian, the first film. I request our guest presenters to kindly stay back on the stage. Congratulations to you. You can enjoy this moment.
And well, cinema is evolving, we all know, and storytelling is finding new frontiers beyond the big screen. And the rise of OTT platforms has redefined filmmaking, bringing diverse stories directly to the audiences worldwide. To present the award for Best OTT Film, may I please request our guests now to present the award. I'm so excited to announce this. The award for the Best OTT Film goes to my dearest friend and her team. And my friend and lovely team, Mrs. Woo! Harman Baweja Well, and that's Aarti one Kadam. film which is being loved by the audiences. It's been received by the director of the film, Aarti Kadam. If you've all watched the film and if you all love the film, then I'm sure you're going to welcome this moment with a huge round of applause. Thank you to Jagran Film Festival for giving us this award. And thanks to my producer, Harman Baweja, for choosing me to direct it. I'm very grateful. Thank you. Well, thank you so much. I think, we're very grateful to be here. This was the very intent, I think, when we started on our journey to make this film, was hopefully to stir a conversation. And, I think both of us keep sharing with each other everything that we initially saw, and now we're kind of letting it kind of spiral on its own. So very grateful to the whole team, to everyone. And, Sanya, Aarti, Anu, Smita, Jyoti Deshpande, and also a couple of men who worked on the film, including myself. But at what Thank you. point of time did you feel that this film would touch the audience's heart? I think from the moment that I had seen the original film, which was made by Jio Baby, The Great Indian Kitchen, and at that point I'd watched it with my then newly married wife and my sister, and I think when the film finished, 48 hours later, one had procured the rights and then started a long period of finding the right person, the right captain, as I call her all the time. All right. So I think adapting it and making it true to what it stands for is something that the whole team strived for, and that's why we're here. So thank you. Thank you, everyone. Well, congratulations to both of you. Sure, you would like to say something, Amit sir. You know I love you. And congratulations to both of you for making Mrs. Just a question, okay? Will you ever make Mr.? Love you all. Amit just bagged himself a role, basically. Well, let's just keep it a secret. But that's the end of that. Yeah, I'll message you. Thank you. Well, congratulations to you. Well, now we move on to the Documentary Award. And as we all know, the documentaries, they bring real stories to life, capturing truth that deserves to be seen and heard. To announce the winner for Best Documentary, may I please invite Alejandro Cortes and Dr. Rajni Acharya to the stage to announce the winner. So let's see who's the winner of the Best Documentary Award. So the award for Best Documentary goes to 6A Akash Ganga. Akash Ganga wins the award for the Best Documentary. And the award being received by Nirmal Chandra Dhandriyal, who is the director of the film. Congratulations to you, Nirmalji, for this award. Making documentaries needs passion, and that is what Nirmalji has shown in this film, making the documentary. It's made on a legend called Annapurna Devi. We wanted this story to be told to the world, and therefore we took a decision to make this documentary 6-7 years back. And Nirmal did a fabulous job. I must thank him for that, and I think it's come out better than what we expected. Congratulations to you. Thank you. Congrats. And thanks to the guest presenters for presenting the award. Thank you. Well, ladies and gentlemen, the great filmmakers begin with a bold first step, crafting stories that leave a lasting impact.
So may I please request Mr. Anil Sharma to come on stage and announce the award for Best Debut Director for 2024. Good evening. I am very happy and excited to be here. इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, उसके बावजूद भी मैं आया. जागरण फिल्म फेस्टिवल का इतना इम्पैक्ट है क्योंकि सारे यंग यूथ नए नए बच्चों को ये अवार्ड्स देते हैं, नए नए लोगों को, और जो कि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन जिन को भी अवार्ड मिला है, और जो नहीं भी पा पाए हैं उनको भी बधाई क्योंकि वो यहाँ तक तो पहुँचे. तो नाउ I will announce the award which I am going to announce. शशि चंद्रकांत खांडरे को साहब को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा. डेब्यू डायरेक्टर मतलब इनकी पहली फिल्म बतौर निर्देशक, जिसका मतलब ये पहली बार मंच पर इस पुरस्कार के लिए बतौर निर्देशक आ रहे हैं, तो तालियों में भी गूंज होनी चाहिए. First, thank you very much, my team, Gypsy. Thank you very much, all of you. Thank you, all jury members. Thank you very much, जागरण फिल्म फेस्टिवल. ये फिल्म मैंने बहुत ही प्रयास से की है. ये फिल्म करने के लिए मुझे आज तक मतलब 5 साल लगे. तो मेरा इतना हौसला बढ़ा है जागरण फिल्म फेस्टिवल ने कि मैं मतलब कि बता नहीं सकता हूँ. इट्स अनबिलीवेबल. थैंक यू वेरी मच जागरण. This was the Best Debut Director Award, and now move on to the Best Director Award. And a great director, we all know, transforms a vision into a masterpiece, shaping stories that stay with us forever. May I please request Anil Sharma ji now to announce the award for the Best Director. बहुत बहुत बधाई हो आपको रीमा दास जी, आपको जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल रहा है. इस बार बहुत सारे अवार्ड लेके जा रही हैं आप विलेज रॉकेट स्टार 2 के लिए. Now that's the third award that goes to the film Village Rockstar 2. Award being received by Reema Das, the director of the film. Congratulations to you, Reema ji, and thank you so much, Anil Sharma ji, for doing the honors. And now, ladies and gentlemen, we come to a very special award of Jagran Film Festival, because after an incredible journey across 18 cities, this award reflects the voice of the people. This award honors the film that captivated audiences everywhere when this festival traveled across 18 cities. Now, to announce the winner of the most admired film of the festival, that is Audience Choice, I request Rajat Kapoor ji and Samantha Kochar ji to kindly come up on the stage to do the honors. Hi, congratulations to Jagran Film Festival, to all the winners. The award for the Audience Choice goes to... Namaste, sir. So the film Namaste Sir bags the award for the Audience Choice Award. Gaurav Asri ji is not here, but his team is receiving the award on his behalf, because Gaurav Asri ji has been blessed with a baby just an hour back. What a gifted day for him indeed. Congratulations to Gaurav Asri and loads of love and blessings to the newborn. दोहरी खुशी है ये, एक और जागरण फिल्म फेस्टिवल का ऑडियंस चॉइस अवार्ड और दूसरी ओर घर में खुशियां आई हैं.
थैंक यू जागरण फिल्म फेस्टिवल को पहले तो आई एम द को राइटर ऑफ द फिल्म और एज यू नो गौरव सर कुड नॉट बी हियर बिकॉज ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड विद एन अवार्ड बाय गॉड उनके घर में एक बेटी हुई है सो थैंक यू फॉर द लव इस फिल्म को जो दिया गया है जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी फिल्म को इतने ऑडियंस तक पहुंचाया और दिखाया सो वेरी थैंक यू टू एवरीवन एंड माय टीम दर्शकों का ढेरों प्यार मिला है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद Samantha ji and Rajat ji, I would request you to please stay back for the next award. And now we would like to announce the award for Best Feature Film Indian. The award for the Best Feature Film Indian goes to, no surprises there, Village Rockstar 2. Wow, so that's the fourth award that goes to Village Rockstar 2. The director Reema Das coming on the stage to receive the fourth award for the film. And this is the Best Feature Film Indian of the Jagran Film Festival 2024. बहुत धन्यवाद सबको इतना प्यार इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए यही कहना चाहूँगी कि और सबको जिन जिन की फिल्म इस फेस्टिवल में आई क्योंकि एक फिल्म बनानी इतनी आसान बात नहीं होती है सो थैंक यू एवरीवन मेकिंग एंड कीपिंग सिनेमा अलाइव एंड ऑल्सो But Reema ji, I have one question. Secret क्या है मंत्रा क्या है हैट्रिक से आगे चले गए हैं आप Fourth award. Love. What do you think is the secret? Love Love. for cinema? Yes. Thank you. That's a brilliant answer, I must say. Thank you. Congratulations to you, Reema ji. Congratulations. And thank you so much, Rajat ji and Samantha ji for presenting the award. Now tonight, we celebrate the brilliance of international cinema with the award for Best Feature Film International, which goes to the film Quadrilateral. May I have the winner, AV, please? Hello from Peru. Thank you from the bottom of my heart for this amazing Best Foreign Feature Film Award. It is one of the greatest honors of my life. India has an extraordinary cinematic legacy, and having Quadrilateral recognized at the Jagran Film Festival is truly humbling. Thank you to the jury for believing in this film and giving it a place among such remarkable works. Thank you to the incredible cast and crew. I am beyond grateful for your trust. And to the audience, thank you for watching and for letting this unsettling, darkly humorous story live beyond the screen. I am truly sorry that it was impossible for me to be there with you. But cinema has no borders, and the concept of Jagran Film Festival is just that, bringing cinema to all the people at the largest traveling film festival in the world. What an honor. So that was the Best Foreign Feature Film, Quadrilateral, celebrating a powerful performance that captivated audiences on the digital screen. To announce the winner for Best Actor for OTT Female, may I please invite Alejandro Cortes and Saurabh Sachdevaji to the stage to announce the award. First of all, congratulations, Jagran Film Festival and people who are winning these awards. So the award for Best Actor OTT Female goes to Sania Malhotra for Mrs.
So Mrs. gets another award, and Mr. Harman Baveja to receive the award on behalf of Sanya Malhotra. We have a video message from Sanya. She sent a thank you note for all her fans. Let's watch it. Hello everyone, I'm truly honored to receive this award from the Jagran Film Festival for Mrs. It's a film very close to my heart, and I'm so grateful for all the love and appreciation it has received. A huge thank you to the festival for this recognition, to my incredible director Aarti Kadhav, cast and crew who brought this story to life, and to the audience for embracing Mrs. with so much warmth. I wish I could be there in person to celebrate, but I'm sending my love and gratitude to everyone present. Thank you again so much. Congratulations to Sanya and to the film, Mrs. A powerful performance leaves a lasting impact. To announce the Best Actor Male Award, may I please request our guest presenters to please announce the award. So, the award for Best Actor Male goes to Sparsh Shrivastava. Sparsh Srivastav's mother, Ragini Srivastav, is receiving the award on behalf of her son. A proud moment for a mother. हम सब जानते हैं कि किसी के भी जीवन में उनकी माँ का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है. And I'm sure when Sparsh receives the award, then her mother is a proud mother today indeed. Congratulations to you, Ragini ji. एक्चुअली बेटा तो हर माँ के लिए बेस्ट होता है, ये तो बड़ी बात नहीं है, पर आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद और आप सब उसे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए. आई थिंक ये हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे के लिए ऐसे अवार्ड लेने जाए, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा बेटा मुझे इसके लिए रखता है आगे कि मैं उसके लिए अवार्ड ले पाऊँ. थैंक यू सो मच एवरीवन. Congratulations to you. We also have a message from Sparsh himself. Let's see what he has to say. Hello and namaste everyone. First of all, I'm really thankful and glad and humbled to be receiving the award of Best Actor by Dainik Jagran. Let me tell you that these awards really gives me the motivation, the boost to keep walking forward and work even harder and better. But I'm also a little sad because I could not attend the ceremony. But the good part is that my mother is receiving my award, and I'm really happy for that. So thank you so much for this beautiful honor. And all I can say is cheers to good cinema. Thank you. And thank you our guest presenters for doing the honors. And now the award for Best Actor Female goes to Nitanshi Goel for Lapata Ladies. Unfortunately, she couldn't be here today, but congratulations to her, and well, the show must go on. But Lapata Lady is bagging another award. So, ladies and gentlemen, cinema is not just about stars, it's also about the unsung heroes who've kept the industry running for decades, brick by brick, reel by reel. And tonight, we honor one such silent guardian of Indian cinema whose life has been intertwined with the magic of movies for over 40 years. Can we have the AV first? छाबू तुकाराम नागरे, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये मुस्कुराहट है 70-80 के दशक के सिनेमा प्रेमियों की. सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार करती जनता के लंबी लाइन.
70 से 80 का एक वो भी दौर हुआ करता था जब छाबू जी अपनी साइकिल के पैडल से सिनेमा की रील को पूरे बंबई में घुमा दिया करते थे। बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की रफ्तार इनकी साइकिल की रफ्तार का सहारा लेकर चलती थी और इनकी साइकिल की घंटी की आवाज सिनेमा शुरू होने की घंटी की आवाज हुआ करती थी, क्योंकि छाबू जी की साइकिल पर बंधी होती थी हर सिनेमा प्रेमी की खुशियां, यानी सिनेमा। बड़े से बड़ा फिल्म स्टार भी जनता के बीच तब तक नहीं पहुंच पाता था जब तक छाबू जी उनकी फिल्म की रील और पोस्टर को अपनी साइकिल पर बांधे सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंचा दिया करते थे। आज पूरा जागरण परिवार सिनेमा के इस डाकिया की निष्ठा और लगन को तहे दिल से नमन करता है। Let's have a big round of applause. हमारे भारतीय सिनेमा के गुमनाम नायक हैं ये, जिनकी वजह से इंडस्ट्री चलती रही है। May I now please invite Rajat Kapoor ji and Madhurita Anand ji on the stage to give away the award for the special contribution to cinematic art to Mr. Chabu Tukaram Nagre. विशेष जोरदार तालियां चाबूराम जी के लिए। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो आपको कहीं किसी फिल्म फेस्टिवल के मंच पर नहीं मिलता, लेकिन जागरण फिल्म फेस्टिवल ऐसे गुमनाम नायकों को पहचान दे रहा है, हमारे सामने ला रहा है। विशेष सम्मान चाबूराम जी के लिए। कुछ शब्द हमें भी बताएं आपका अनुभव, क्योंकि आज तक तो आप सितारों को देखते आए हैं बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में, वो अवार्ड लेते हैं, लेकिन आज आप स्वयं ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मैं पब्लिसिटी थिएटर का, सब सिनेमा का पब्लिसिटी में पहुंचाता हूँ। सब मैं महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र सब जगह पे मैं पब्लिसिटी भेजता हूँ। एक सवाल पूछूं, जब आपको पता चला कि आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? अच्छा लगा। हैरानी नहीं हुई? हैरानी नहीं हुई? That's the confidence. A big round of applause, please. Congratulations to you. Rajat ji, Madhurita ji, you are requested to please stay back for the next award, because recognizing individuals whose excellence and achievements have left a lasting impact not only in the Jagran footprint but on the world of cinema. Now to announce Achievers Award, may I please request our guests to do the honors. Award for Achiever goes to Vineet Kumar Singh. Vineet Kumar Singh receives the Achievers Award. शब्दों के मुख को चलाता हूँ थोड़े से, रिंग तो नहीं है ये। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जागरण फिल्म फेस्टिवल को। एक बड़ा ही खूबसूरत फिल्म फेस्टिवल है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। उस शहर में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो फेस्टिवल का सिनेमा देखना चाहते होंगे, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। उन मजबूरियों के दायरे को तोड़ के उन तक सिनेमा पहुंचाता है। थैंक यू सो मच जागरण फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत ही अद्भुत है। मैं अपने लिए ये जो है अवार्ड, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जागरण फिल्म फेस्टिवल का और निर्णायक मंडल का जिन्होंने इसके लिए मुझे चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी अचीव करने के लिए वो कहा जाता है ना, अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। बहुत सारे लोग मिलके उसे सहयोग करते हैं, तो बहुत सभी लोग हैं, सबका नाम लूँगा तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी कुछ नाम लेना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी डायरेक्टर्स का जिन्होंने मुझे अपनी खूबसूरत फिल्मों में काम करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन राइटर्स का जिन्होंने वो किरदार लिखे जो मुझे निभाने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद निर्माताओं का, बिकॉज उनके बगैर फिल्म कहीं पहुंच नहीं पाती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्म बनाने में बहुत सभी लोग लगते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लगते हैं,
सबका नाम लूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन मेरी भावनाएं आप सब तक पहुँचे। कैमरा डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, थैंक यू सो मच। और उन सभी स्पॉट बॉय दादाओं का जिन्होंने मुझे पानी पिलाया, कुर्सी दी, चाय पिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बच्चा कहीं पहुंचता है, माँ बाप उसे इस दुनिया में ले आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ 2023 में इस दुनिया से चली गई। आज वो होती तो उन्हें अच्छा लगता। धन्यवाद अम्मा। बहुत सारे आंसू गिरे थे, उसको उन्होंने पोंछा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद पापा। मेरी छोटी बहन जो हमेशा मेरे साथ रही, मुक्ति, लव यू सिस्टर। मेरा छोटा भाई जिसने बहुत 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 बार हनुमान की तरह मेरी मदद की है, समीर भैया सामने बैठे हैं, वो उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड माय वाइफ रुचिरा, और मेरे वो सभी दोस्त जिन्होंने मुझ में भरोसा रखा। थैंक यू सो मच। विनीत जी, आपने हम सबको भी बहुत भावुक और इमोशनल कर दिया। आप अपने आंसू पोंछ डालिए। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, बात अब शब्दों की करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको तसल्ली देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिल बेकाबू कर देते हैं, लेकिन अल्फाज जब गीत के सांचे में ढलते हैं ना, तो एहसास होता है कि शब्दों में वाकई जादू होता है। भारतीय सिनेमा के सुनहरे गीतों ने लाखों दिलों को मोहित किया है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो इश्क को बेहतरीन अंदाज में बयां करते हैं, दर्द को शायरी में ढाल देते हैं और खुशी को और बढ़ा देते हैं। ऐसे कई सदाबहार गीतों के पीछे एक ऐसे जीनियस हैं जिन्होंने हर भावना को शब्द दिए हैं, जिन्होंने हर कहानी को एक पोएटिक मास्टरपीस की तरह प्रस्तुत किया है। उनके कलम के जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि अब आप अपनी आंखें बंद करें और बस इन गीतों को ध्यान से सुने, इनके शब्दों की गहराई को महसूस करें, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस ट्रू आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा से, जिनके बिना हिंदी फिल्म गीतों की दुनिया अधूरी है। काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी चाहते को फिजा में बहे, जिंदा रहेगी होके फना। सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। So that is Sameer and Jan. And now may I please invite all the jury members. Vidit Kapoor ji is already on the stage with Madhurika ji. I request all the jury members and Anil Sharma ji to please come on the dais to confer the Icon of Indian Cinema Award to Shri Sameer and Jan. The Icon of Indian Cinema Award goes to Shri Sameer and Jan.
मोमेंट इंडीड. ये कहना गलत नहीं होगा कि बचपन से आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं. लेकिन समीर जी, एक बहुत मुश्किल सवाल जो बहुत मंचों पर आपसे पूछा जाता रहा होगा वो यही कि इतने सारे गीत लिखे हैं, कोई तो गीत होगा जो आपको लगा एक चैलेंज था, जिसको लिखने में वाकई सोचना पड़ा. सबसे पहले तो मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल वालों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ. उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतने बड़े मंच पे बुला के सम्मानित किया. ये जो सवाल आपने पूछा है बड़ा मुश्किल सवाल है. कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता है जब आपको कोई न कोई नया चैलेंज नहीं मिलता. हर गाना मेरे लिए एक नया चैलेंज है. अभी आपने कहा कि जब लोग ये बोलते हैं कि आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, तो किसी शायर ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. उसके जवाब में मैं केवल एक, किसकी लाइन है मुझे पता नहीं, बट जो मैं महसूस करता हूँ केवल इतना ही है कि इस ज़मी आसमां से आगे हूँ, इस ज़मी आसमां से आगे हूँ, वक्त के कारवां से आगे हूँ. मैं कहाँ हूँ ये खुदा जाने, कल जहाँ था वहाँ से आगे हूँ. तो एक बड़ा लंबा सफ़र रहा और अनिल जी मेरे बगल में खड़े हैं. इनके साथ भी बहुत सारी फिल्में की हैं. थोड़े नाराज़ थे, बीच में इधर उधर गए हैं, मगर फिर आएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे रहे हैं. ये मेरे ख्याल से चौथी पीढ़ी की लड़ाई चल रही है 4 जनरेशन के साथ काम करने के बाद. और पंकज कपूर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं और महान एक्टर, और हम लोग बहुत साथ रहे हैं और पूरी एक टीम हमारी रही है 80s की जब हम शुरू हुए थे. और एक लंबे समय में एक बात समझ में आई कि वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बदलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप थक जाते हैं, आप सेनाइल में चले जाते हैं. और जिसने बदलाव को जिया है वही आगे चला है. वक्त के साथ चलना बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, अपने को तोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है. अभी अभी मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है सिकंदर, जिसके गाने ऑलरेडी एक गाना आ गया है और बहुत मशहूर हो रहा गाना वो. तो मेरी लड़ाई ये जारी रहेगी. और एक और खुशखबरी आपको देता हूँ कि इसी मंच पे, ये मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इसी फिल्म फेस्टिवल में मेरे बेटे सिद्धेश पांडे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी थी. उसको लोगों ने बहुत सराहा, बहुत चाहा, और आशीर्वाद देता हूँ कि अगली बार फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड ज़रूर मिले. मुझे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, मिलते रहेंगे, बट मेरी दिल से यही तमन्ना है कि अब उसको लोग जैसा प्यार मुझे दिया आप लोगों ने, वैसे ही उसको दीजिए. थैंक यू. बहुत बहुत मुबारक है आपको समीर जी. इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस. ये जो बोल रहे हैं कि मैं इनसे नाराज़ हूँ, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. ये मेरे प्यार, मेरा दिल है. इनके पिताजी के साथ मैंने काम शुरू किया था जब मैं 21-22 साल का था. पहली फिल्म थी मेरी श्रद्धांजलि, और 2 फिल्में उनके साथ की. और इतने बड़े अनजान साहब ऐसे लिरिक राइटर भारत में पैदा ही नहीं हुए, और ये उनके पुत्र हैं. इन्होंने पूरी तरह नहीं, 100 दफ़े नहीं, 1000 दफ़े इन्होंने साबित किया है. आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर. और काम तो आपके साथ करना ही और करते ही रहेंगे. दिल के करीब हैं और रहेंगे ही. चलिए, अब तो आप मुकर नहीं सकते, वरना जागरण वाले आपको घेर लेंगे कहीं ना कहीं. अनिल जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस पुरस्कार के लिए. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द गेस्ट्स फॉर कमिंग ऑन द डे. क्योंकि हर खूबसूरती स्टांट होता ही है, ऐसे में ladies and gentlemen, the curtains draw on this spectacular evening. We come to the culmination of the 12th edition of Jagran Film Festival Awards 2024. A heartfelt congratulations to all the winners for their outstanding achievements. And to our incredible audience, thank you so much for your unwavering love and support for cinema. Thank you for being part of Jagran Film Festival Awards 2024 in association with Government of Uttar Pradesh and supported by Government of Uttarakhand. Good night, ladies and gentlemen, and we shall see you next year once again. Thank you so much for this lovely evening. Have a great time ahead. Thank you.